तो जी, तो आज कैसा लगा हमारा मेरा जो ये है रूम? ना ये रूम चेंज करने अजरबैजान के बाद पे दिया मुझे उन्होंने। सेकंड डे है। ठीक है, क्योंकि मेरा रूम रूम यही है तो था। मैं ब्रेकफास्ट तो भी अपने ये लोगों ने रात को मेरे ख्याल होटल से, में मैं लेट नाइट ब्रेकफास्ट के पहुंचा लिए था, आया हूँ, क्योंकि फिर मेरा तो ब्रेकफास्ट हो उठने की थोड़ी वजह से या एंग्जाइटी तरह हो शोर होगा या इसकी वजह, कुछ भी रीज़न की वजह से इन्होंने मुझे स्टैंडर्ड रूम दिया कि आज नाइट आप इधर जो है ना स्टे करो, मॉर्निंग में हम चेंज कर देंगे। तो मॉर्निंग में इन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया है। अभी जैसे ही मैं वापस आया हूँ अपना सिटी टूर करने के बाद, तो मेरा रूम चेंज हो चुका था। मेरे बैग्स वगैरह जो है ना इन्होंने खुद शिफ्ट कर दिए थे। रूम आपको मैंने दिखा दिया, बहुत बेहतरीन रूम है। ठीक है। और टूर जो था आज का वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मैं उसका जो है नंबर है और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मुनासिब प्राइस थे। ठीक है। सबसे बड़ी बात है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड जो है मैंने ले लिया। सिम कार्ड मुझे मिला है 14 मन्नत में, जिसके अंदर 6 GB डाटा है। ठीक है। करेंसी मैंने चेंज करवा ली है। करेंसी जो है ना, बेहतरीन सोल्यूशन जो है चेंज करने का वो है बैंक। ठीक है। तो आप कभी भी आएँ तो अज़रबैजान, तो आप जो है ना बैंक में जाके जो है ना अपनी करेंसी चेंज करवाएं। ठीक हो गया। और आज का जो टूर है वो आप लोग देख चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो जो है ना, मैं आपको गबाला लेके चलूँगा, गबाला विज़िट करवाऊँगा। गबाला भी यहाँ की मोस्ट फेमस प्लेस है। तो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। लेट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गबाला में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। Means in the translation of Russian language, it means like trade, the place for trade makers, for traders, Targova. But it's still very popular. Still, most of the population, we call this place not Nizami Street. It's more official. We call it Targova. Like this is the place where people meet mostly, because there is too many cafes, restaurants, and also shops. So people in their free time after work, for example after 6 p.m, they are going out, they are going to Targova to have some coffee or maybe to have some lunch, dinner. So yes, and this is the place, how to say, where the people coming for the rest, you know. Yeah, it's called After Targova. work they are going for relaxation, huh? They are going for what? Relaxation. Yes, yeah, relaxation. That's right. After work, they have like 2 or 3, a couple hours of free time. They are going to Targova mostly. दोस्तों ये मैंने इधर अज़रबैजान में जो है ना अपना एक ऑनलाइन टूर गाइड बुक किया था। नेम है अली। Yes, Ali. इसका नेम अली है। ये अज़रबैजान के ही रहने वाले हैं। ठीक है। यहाँ के ये नेशनैलिटी होल्डर हैं। ठीक है। तो मैंने जो है प्राइवेट जो है इनके साथ जो था टूर बुक किया था। अभी ये मेरे साथ है। मुझे ये आज पूरा दिन जो है ना अज़रबैजान जो न्यू और मॉडर्न सिटी है उसका विज़िट करवाएंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे ये मुझे विज़िट करवाएंगे मैं जो है ना आपके साथ शेयर करता रहूँगा। After that, we will go to Heydar Aliyev Center. ओके। Yes, and after Heydar Aliyev Center, we will have a lunch. And after lunch, our tour is finished. So this is the main streets of Baku city. It's This one? Targova. Yeah, it's called Targova, Nizami Street. निज़ामी से। Yeah. Nowadays we call it, after we got our independence, we call it Nizami Street, and all the other streets that had some other names during the Soviet Union period, they had like more Russian names, as Targova, for example. See the flame towers. That is The flame three tower. towers that we are going now. We are going to them, near them. They are like near the Highland Park, so we will talk about them near there. So about this again, oil worker streets. At the left side is Baku Boulevard. We will talk about Baku Boulevard also in Highland Park, just like for you to see. And at the right side, mostly
in this oil worker street, in this Neftçiler street, there's mostly very expensive shops like Gucci, Adidas, Sophie Couture, all brands starting from the start of this Neftçiler street till the end. There's all brands. Parking because, and as at night time people are coming all this way, they are parking their cars, so you have just one slope to go. So this is at the right side, Fairmont Hotel. So as you can see, it's very easy to pay for some conference mostly. Mostly some B&A, we have like the Alley of Mortars. Okay. So we will talk about the history of this place and why this place is with it's kind of graveyard. We will talk about it. Okay. So this date we call Black January in our history. So what about this date? So in 1990, well, as you know, from 1920, Azerbaijan were under Soviet Union. So we were calling Azerbaijan Republic of Azerbaijan Soviet Union Republic. So from 1920 till 1992, we were under Soviet Union. But starting from 1988, Soviet Union in total it started to lose its power. As you know, except Russia, there were 14 countries. So some of these countries they started to want, not only countries, the Azerbaijan, Soviet Union were getting from Azerbaijan like 85%. It's a very huge amount of oil. So yes, in the 1988, so people started to want so of course they understood. So the first president of Soviet Union, why first president? Because till him it was Secretary General in Europe, even starting from which is going from 1930s. So in 2011, Azerbaijan surprisingly won this song contest because no one was expecting this, because Azerbaijan is a very small country and not very popular. Like in Europe, the people are not knowing. The people in 2011. जी दोस्तों, अभी हम जो आ गए हैं अज़रबैजान का हमारा जो आज का ट्रिप है वो स्टार्ट है। तो हम आए हैं फ्लेम टावर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मूव करके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लेम टावर है, ठीक है। और मोस्ट फेमस और ये समझ लें कि अज़रबैजान का दिल है, ठीक है। बहुत सारे विजिटर्स को देखने के लिए आते हैं। उसके बाद मेरे पीछे देखें, ये फ्लेम टावर है। ये जो आग जल रही है ये 24 घंटे ऐसे ही जलती रहती है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल गैस है जो है ना इन्होंने की हुई है। ये भी मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। और जिधर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है,
ठीक है, इधर से आपको अज़रबैजान मैक्सिमम नज़र आता है देखने के लिए। तो मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ वो भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पहले हम चलते हैं इस फ्लेम के अंदर, जिधर आग जल रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 24 आवर 7 डेज़ 24 आवर 7 डेज़ ये कंटिन्यू जो है ना आग चलती रहती है। ठीक है, ये तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ये ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। Oh Mann, wer wird sich da unterhalten? Ja, genau. Ah, sammelt sich das schon. Oh, das ist so. Jetzt. Einer ist wieder nicht. Oh, die geht's gar nicht jetzt. Guck mal, ich will abbrechen, steht schon. He started in 1941. He started as a soldier, and at the end, in 1944, after he's dead, he was a. So at the right side, it's again Sokar, building of Sokar. So at the right side again, we are seeing near Devil Eye, the Danismo, and it's Flame Towers also, as you can see, the monument where we were standing in there, Yeah. where the fire was there. So also you can see, for example, for now it's 70. The speed limit is 70. yeah. So there we can run 70 or have little buffing system. We can go 10%. Yeah, we can go maximum till 80. Maximum 80, Yeah, 10% actually. Yeah, 10 plus 10. Plus 10. Plus 11 is fine. So 10 minutes. So this is. Park here. तो जी नाज़रीन, ये है बहुत ही यूनिक बिल्डिंग। ठीक है, ये कारपेट मार्केट है बाकू की। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कितना खूबसूरत है। ठीक है, At the top, you can see two lions, which is protecting one bull. So this is the sign that mostly in that time Shirvanshahs, which were ruling, the dynasty which were ruling in here, the soldiers are looking after farmers, like looking after the normal people. Like lions are protecting the bulls. So this is the entry to this Ichari Shahar, to this old city. So starting from here, at the right side you can see tourist information center. So it's mostly selling very expensive tours for tourists. Then at the left side we can see like restaurant, the right side shops, then some exchange over there, but it's a bit giving very small for the girls to have their education, like even back in 1920s, 1910s. So then when the Soviet Union army came, the going out at this time. So yeah, that's right. that what they is the don't name have this tower? This one? Huh. Yeah, this one is made in tower. Okay, So now we are going near there. so we go up also.
No, actually no, because it's including the ticket. So if you have to go out, we have to buy ticket. How much But this one ticket? huh? You can buy a ticket from there and go up, but we don't we don't suggest to our tourists. So that's why we getting out the tickets from our tourists. So I mean, it's not very useful because you have to go by yourself. There is no elevators. You have to go Okay, okay. up by yourself, and then when you are going up, There is no there elevator. is just a roof. Okay. From roof, you are from the ninth floor. You are seeing the view to the city. So that's why it's not very useful. But if you want, you can go. But it's a bit. So tough. there is no lift, huh? No, there is no elevator. Only. How much ticket price here? Ticket price actually it's 15 manat for tourists. 50? 15. Just for going up. So there is nothing upside. Yeah, upside. All other the stuff that's coming with the enemies, they were starting to build this made in tower to protect themselves. And as you will see from here, from that side, we can see small buildings, small windows, which is just like space for arrows that's going from there, and it's very unbelievable to shot to that windows to kill, how to say, the arrows, which is shooting from the tower itself. But it was very easy for the arrow man, which were in tower, to kill that enemies. This is the first theory that why this made in tower was built. The second one, which the people is very believing for, this is that back in that times in Azerbaijan there was a king who were ruling in Azerbaijan, and he had his daughter. So he wanted her daughter to marry the other king's son to make their relationship better with the other kings. But his daughter, the princess, she didn't want to marry that king's son, that prince. She wanted to marry just a normal person from the population, so the poor guy. So heard about it, and he didn't want it, so that's why he built this maiden tower to keep her in here. Yes, and at the end to give her to make her marry that prince. This is mosque inside the city. ये मस्जिद है, ये सिटी के अंदर एक सिटी है, ठीक है, तो ये उसके अंदर एक जुमा मॉस्क. Heydar Aliyev, he's the person who he's the kind of poet, but he's a bit unique poet. He's one of the main persons in Azerbaijan poetry with his meykhana, with his ghazals. So what's meykhana? Meykhana is the two poets. They are coming to each other. They are giving us two sentences, and with these two sentences they have to build 4 sentences poem. So they have to think about this just in that time. They can't sit, write it. They are saying it by heart. So it's very unique, and nowhere you can see kind of this type of poets. So it's kind of talent which is coming from God. It's called armudu. Armudu means peach shaped. Pear shaped. Armud means pear. Armudu, it's like shaped. So this is the one of the ornaments of Azerbaijan. So mostly people, they are who is that person is
So this is So Heydar yes, Aliyev. now we are near the Heydar Aliyev Okay. Center. So let's start from who is Heydar Aliyev first. As you had mentioned by yourself, also the airport is on some avenues, prospects like streets, which is called near under parks even under Heydar Aliyev. Who is Heydar Aliyev? Heydar Aliyev is the first secretary. Heydar Aliyev firstly is the Secretary General of Soviet Union Republic of Azerbaijan, starting from 1969 till 1982. He was the first Secretary General of Soviet Union Republic of Azerbaijan. Then, starting from 15th June of 1993, he became the President of Azerbaijan. And from that time, 10 years, he was the President of Azerbaijan. He was the most important president, we can say, in Azerbaijan's history. We can say that he's the person who is the settler of nowadays Azerbaijan. So people in here in Azerbaijan, we love him, we adore him. Kind of, for example, small children, they call him Baba, which means like grandfather. So we have a big respect to him because he was a big politician. He ruled in Azerbaijan like about as an Azerbaijan president and secretary general about like 23-24 years. It's a big time for him. So about this building, this is the center, Heydar Aliyev Center. In there, it's mostly it's kind of like exhibition hall. It's some stuff, some big exhibitions are held in here. तो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हैदर अलवी सेंटर में। ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। असल में ये बिल्डिंग बनी है, हैदर अलवी इधर एक पॉलिटिक्स था, बहुत ही नाइस पर्सन था, ठीक है। इधर बाकू एयरपोर्ट का नाम भी हैदर अलवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, उसी के नाम से बना है। ये बिल्डिंग भी उसी के नाम से बनी है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है ना, ये असल में हैदर अलवी के सिग्नेचर है। ये उस सिग्नेचर को डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक इराकी आर्किटेक्चर थी जिसने इसको डिज़ाइन किया था, वो लेडी थी। असल में ऊपर से देखेंगे तो ये एक सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग उसी के नाम की से बनाई गई है। और उसका जो है ये बर्थडे भी बहुत धूमधाम से जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। फ्लावर डेज होता है, ठीक है। ये लोग उसको बहुत लाइक करते हैं क्योंकि वो आदमी जो है इधर इनके लिए बहुत ही ख़ास आदमी था और बहुत अच्छा आदमी था। तो अभी हम जा रहे हैं सिम लेने के लिए तुर्क अजहर सेल के ऑफिस में। ये है अजहर सेल का ऑफिस, आप देख सकते हैं। तो जी टूर जो है हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये लास्ट जो हमने ब्रेक किया ये की है लंच के लिए। ये लंच भी मेरे पैकेज में इंक्लूड था। अच्छा, ये जो है ना हमारा टूर जो है वो भी अपने अख्ताम को पहुंच गया। हमने मोस्ट फेमस जो अट्रैक्शन प्लेस थी इधर की अज़रबैजान की हमने घूम ली है। अभी हम आए रेस्टोरेंट में लंच के लिए। ये लंच जो था ये भी पैकेज में इंक्लूड था, ठीक है। लंच के लिए जो है लंच आ रहा है।
ये आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में इन्होंने लंच भी दिया है। लंच का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो ये टूर पैकेज जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही नाइस कंपनी है। ये एक स्मॉल कंपनी है, स्टूडेंट लड़का है, तो जो है ना वो इसको हैंडल कर रहा है। अभी इसने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त है और प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट $30 पर पर्सन है, जिसमें ये आपको वीआईपी गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज़ की गाड़ी है, उसके अंदर ये आपको टूर करवाता है। ठीक है, बाद में जो है वाटर अनलिमिटेड है। उसके बाद लंच जो है वीआईपी रेस्टोरेंट में लंच है, आप जो खाना चाहते हो आप मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं खाने जा रहा हूँ लंच के बाद जो है ना मैं आपको फिर जो है इसी से हमारे टूर का अख्ताम हो जाता है। अच्छा, ये सूप है इधर का, बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्टर में उन्होंने हमको ये जो है ना सूप दिया, वेरी नाइस सूप। अच्छा, ये जो है ना लंच मेरे पैकेज में इंक्लूड था, आप देख लें। ये सूप है, ये ब्रेड है, ड्रिंक ले सकते हो, वाटर बॉटल है।